All right, hi everyone, welcome on board. It's a big day today. Waiting for YouTube to send me live. बहुत मजा आने वाला है आज. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है बिकॉज आई हैव हिडन सम ग्रेट पीपल. आज कैट 100% डायलर यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं और उनके अलावा अंकिता मैम है जो कि IIM अहमदाबाद की है, हीत भाई है हमारे IIM कैलकाटा के, और सिमरन मैम जो कि भारतीय एयरटेल की HR भी है और स्नैप क्रैक करके बैठे हैं, और अनीशा मैम नारसी मुझी टॉपर है. भाई बहुत अमेजिंग लोग आए हैं. आई एम लाइव, आई थिंक आई शुड बी लाइव. हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. कैसे भाई आप लोग? लेट्स गेट द पार्टी. आज का सेशन बहुत धुएंधार है. हाँ, पूरा एंड तक सुनना और स्ट्रीम को लाइक नहीं ठोका तो लाइक ठोक दीजिए बिकॉज इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन टुडे एंड यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस एज वेल. हम लोग एक काम करेंगे, आज आपकी चैट पे भी ध्यान देंगे. अगर आपका चैट के अंदर कुछ स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है भाई? कौन कौन है भाई? हाय एनटीएफ गेमिंग, हाय रायन अग्रवाल, हाय सौरभ, हाय द्विज, कुश, रजत और प्रीति मोंगिया. ये कुछ मेरे रेगुलर लोग हैं. क्या हाल चाल है भाई तुम्हारा? क्या हाल चाल है? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. चलिए शुरू कर रहे हैं. आई विल जस्ट ओपन माय चैट हियर एज वेल. ओके, जस्ट अ सेकंड. Okay. Can somebody send me the link as well? यहाँ से लिंक ठीक है. ओके ग्रेट. शुरू करें भाई, शुरू कर दें. हाय अजंक्या, ठीक है भाई, शुरू करते हैं. लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ बिग फैमिली. वी आर अ 200K फैमिली. 2 लाख कम नहीं होता है. अब मैंने बाकी सब तो बुझा दिए, बस K रह गए यहाँ पे और हम अगला टारगेट नया सेट करेंगे. बट लेट्स जस्ट वेलकम दीज पीपल वन बाय वन. लेट मी जस्ट चेक विद जगेश. हाय जगेश, आर यू लाइव? इफ यू आर लाइव, यू कैन स्विच ऑन योर कैम, दैट विल बी ग्रेट हेल्प. Yes, sir. Hi, sir. Hi, everyone. Good evening. Very good evening, boys and girls. Please welcome Jagesh Golwala, CAT 100% dialer from IIM Ahmedabad and stud आदमी. इसका quant भी 100% dialer है और 99.99 DILR. Verbal was 99.28. Yes, sir. बस नाक कटाओ मेरी बस तुम. अरे क्या नाक कटाओ भाई. ऑल इंडिया भाई टॉपर ये होते हैं, टॉपर लोग. वेलकम गाइस. प्लीज वेलकम Jagesh and he's an amazing guy. Jagesh, where are you joining in from? Where are you right now? So I'm right now in Ahmedabad, in the campus. In the dormitory, which new Yes. hostel, the old hostel? New ones, yeah. क्या बात है, बहुत ही amazing. So boys and girls, please welcome Jagesh. Let me just go to Heath from IIM Calcutta. Hi Heath, if you can switch on your cam and also that'll be great help. We are going live one by one. Hey everyone. Hi sir, how are you? Good morning. Hi Jagesh. Sorry, good night or good evening. ये सो रहा था, इसको मैंने सो के उठाया. ये बोला था सर मैं थोड़ा थक गया. उठ यार उठ. वेलकम Heath. Heath is joining from IIM Calcutta. Heath is a non-engineer. इनका प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे. Heath, you are a graduate of IIM Calcutta this year, right? Yeah. क्या बात है, क्या बात है. हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है, हम उसके बारे में बात करेंगे. Heath, welcome on board. And Heath works for Kearney, right? Yeah. ये नाम आप लोग बाद में सुनेंगे और आज हम कैट की प्रिपरेशन के बारे में भी आपको काफी ज्ञान देने वाले हैं. ओके, लेट मी जस्ट गो टू अंकिता. हाय अंकिता, वेलकम ऑन बोर्ड. इफ यू कैन हियर मी, दैट्'ll be great help and switch on your cam please. Hi sir, hi everyone. Hi Ankita. Boys and girls, please welcome Ankita again, joining in from IIM. From तो नहीं, graduate हो गई है. Joining in from क्या बोलूं मैं? Joining from Bombay right now and works with Mastercard and has been really helpful in CATKing mentorship, profile portals, verification, mocks and everything. Ankita, welcome on board. Thank you sir. क्या बात है, क्या बात है. Let me just check with Simran. Hi Simran, are you live? Hi everyone. क्या हाल चाल है सिमरन जी? अपना इंट्रोडक्शन दो अपना पहले बात फटाफट. लोग तेरे को मैं दूंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, ये इतनी बड़ी बंदी है ही नहीं. That's very bad, sir. But okay, all right. So everyone, I am Simran. I've been associated with CATKing for quite some time now, almost more than 2 years now. I am a graduate of SCMHRD Pune. I did my MBA in HR. Currently working at Bharti Airtel in HR field itself. I'm based out of Gurgaon right now. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. And were you day 0, day 1 placed from SCMHRD? How was it? So yeah, I mean pre-day 0. It's Pre-day like -1. क्या बात है, बड़े बड़े लोग हैं. Great यार, great. Let me just check with Anisha ma'am. Hi Anisha ma'am, are you on? If you can switch on your cam, that'll be great help. Hi everyone. All right, Anisha ma'am is from NMIMS and you need her help yaar. If you guys want to sail through your CAT journey, if you're a student at CATKing or joining CATKing or getting GDPI, ये मैम ही आपका बेड़ा पार कराएंगे. And she's an amazing lady and she has been to Harvard Business School for Executive Management course और अभी नारसी मुंजी के अंदर हर साल 190-200 बच्चे मैम की लीडरशिप से जाते हैं. क्या बात है. शुरू करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स आज का सेशन. वेलकम ऑन बोर्ड. 330 people odd are people who are live with us right now. This is so amazing. Let's go one by one. Jagesh,
why don't you quickly talk about your journey? आज हम बहुत खुश हैं यार, हमारा 200K हो गया and 330 people are live right now. How their journey? What was your association with CATKing? I think we met long back, 3 years, 4 years back. Yes, it's been quite a while since we've met, but yeah, I think we've been in touch every now and then, quite frequently after that as well. क्या बात है, क्या बात. And you were a student in Powai. Powai, yes. Super, great, yaar, great. And how was those? Were you attending those sessions like Verbal Wednesdays of the World and वो सब करता था अपने time पे? Yes, sir. So I used to attend the verbal Wednesday sessions majorly. I hope I'm audible, right? You are audible, loud and clear. Yes. So like my primary focus was verbal, like as you saw, like that was one of my weaker links compared to other subjects. But primarily, yes, verbal Wednesdays and all the verbals in-person sessions as well, which used to happen at the Powai branch. Yeah, those were my focus areas. Super. क्या बात है भाई, इससे हम ज्ञान लेंगे CAT में 100% कैसे लेना है, and we'll talk about it. Heath, what was the journey? When did we get in touch? When you were in second year of engineering, BMS, right? Second year, third year. Third year, I think. Third year. Probably 2018, 2017, 2018. I'm not so sure about the year, though. But yeah, it was the Borivali branch, if I correctly remember. Yeah. And yeah, we got in touch during that time, and since then we have been in contact every now and then. Yeah, that's pretty fun. ये चेहरे ध्यान से देख लीजिए, ये चेहरे आपको गाइड भी करेंगे. लास्ट ईयर जगेश we did those COVID workshop. What was that about? इस बार भी करना है हमें. बता थोड़ा सा, तूने 1000-1500 लोगों को पढ़ाया था. What was that? Yes, sir. So while COVID was going on, I think everything was online, and I think students also got acquainted with this e-education mode. So at that point of time, we used to conduct once in a couple of weeks, once in a fortnight, or once in a month or so, sessions on all the 3 subjects, covering covering topics one by one. So I used to majorly take up the quant or the DLR sections along with you, and you would take up the verbal sections with Anisha ma'am. And yeah, I think we taught quite many students at that point of time. Yeah, I think it touched around 1,500 after. And we raised money. By the way, this guy along with Ankita and the whole team, they raised money for COVID people who were COVID victims, and that was around 1.5 lakh odd rupees over a period of 3 months, and we distributed to. What are the NGOs name, Ankita? Which NGO was that? Save the Children. Save the Children. Save the Children. Sorry, I forgot. Yeah, Save the Children NGO as well. So thanks, Jagesh, for that. Great, yaar. Great. Simran, how about you? So you had been, yes, Simran, Ankita, ये partners in crime भी है मेरे. Jagesh तो आता रहता live workshops के अंदर, NIT, IIT batches. इस बार भी आया ये, and you'll be meeting him as well. So what kind of content you build, and Simran, how was those long working hours? Long, odd working hours. So we used to work at around till 2 a.m. in the morning, right? You, me, Ankita, Heath, we started off around May 2020, and we started building the course content around how to crack GDs and PIs. And we created, many videos around it. And I'm sure that, all the students have had access to it and they've gone through it, and they might have somewhere helped them. So we started off with that sort of content and went on to, go a little deeper on the Snap bit of it. I took some classes around logical reasoning on Snap. And then we also introduced the Engage program to all the students on how they can build their profiles better. So yeah, I mean, it was a crazy journey. We were doing many things, so that, we cover the students from all the aspects, basically. Superb. This is so amazing. And this is a part of the CATKing family. And 80% of the people were drunk on Ankita's birthday party as well. So I'll not name who was drunk and who was doing what, but we all catching up as well. Chalo bhai, bahut hi amazing. Let's begin, bhai. Now the session begins, and let's talk about the Jagesh. I'm going to start with you. Yaar, फटाफट बता दे. CAT 100% I'll लेके आना है, and then I'll go to Ankita. Ankita is 99.9 in verbal ability. Heath ने DLR फाड़ा है. Jagesh ने 2-3 चीजें फाड़े, and then I'm going to go to Simran and Anisha ma'am as well, and we're going to talk about NMAT, Snap, how these exams are also important, and we'll have a quick discussion. Jagesh, फटाफट बता दे how to get 100% in CAT. Yes, sir. Okay. So as you guys
I think must have already gone through like what a CAT paper looks like, and you might be aware that there are 3 sections, and all of you will have one strong and a weaker section. So while you need to, so one is like focus on your strong subject, ensure that you don't lose grasp of it, but at the same time you should also ensure that you're not leaving away your weaker subject, like because it is essential to score well in that as well. Like so ensure that you are working on your weaker section, giving it more amount of time, but at the same time you are ensuring that you're not losing hold of your whatever the strong section is. So I think that is point number one that I wanted to highlight. Second, I think if I just go section wise, so maybe I'll just briefly touch upon each of the sections. So let's start with quant, because that is also my favorite one. So so quant is all about concepts. I will just recommend focus on concepts, understand the core behind every problem, every topic, and do not learn or by heart the formulas. It will not help you. And practice as much as you can, and that is just learn mental math, be good at numbers, be fast at numbers, and be correct at numbers. Increase your accuracy, increase your speed. I think that are the only 2 things. Maybe like so what I'll do over here is I'll just talk about the section by strategies. Maybe like in how to approach a paper. Maybe we can cover it in some other session or later on, like once you have completed your syllabus or something. Moving on, second is DILR. So once again, this section is all about practice. It's all about numbers. Just do as many unique sets as possible. Do not just focus on topic wise sets over here. What we tend to do is we tend to stick to booklets, focus on one kind of problems, but what the final paper is actually a mix of DI and a mix of LR, and these two come together. So ensure that you are practicing more of exam like questions and not topic wise questions. And once again, the key over here is only practice and speed and accuracy. So that's about DLR. Moving on to VARC, one of the most basic and something that you will hear every now and then from everyone around. I'm sure Rahul sir and Disha ma'am might have already highlighted it. Just focus on reading. Ensure you have a good reading speed. Ensure you have a good hold on your words, vocabulary. Attend the verbal Wednesdays. Do the book which is there. Nominally Lewis book which is there, and practice as much as you can. So once again, like that, there are like different kinds of questions which come in RC. Have a strategy for each kind of questions, develop a strategy for it, practice as many RCs as you can from as many sources as you can. I think once again it all boils down to your reading speed, your reading skills, and your vocabulary. So I think these are the 3 things about VRC. And this as a whole about your preparation, what I also want to highlight is focus on the process, just enjoy the process. There's a lot to learn. Like especially what the key learning or key takeaway for me was that just developing that reading habit, and it is very essential for being a manager, especially once you're studying, giving the CAT for a management degree, and especially after becoming a manager or even in a B school, you'll have to read a lot. And the VRC session is the perfect prep, for your career going ahead. And reading is always a good habit. So that was one of the key takeaways for me. So just focus on the process, enjoy the process, and I'm sure the results will come across for every one of you. This is so amazing. I mean, you summarized everything in the right way. I hope CATKing was helpful in your journey for the GDPI and your verbal classes and everything. Yes, sir. So beginning with CAT prep, like beginning with VRC, developing strategies for, as I told, like there are different kinds of questions. So firstly, like just getting the right sources to read, where to read from. Second, developing the vocabulary using the verbal Wednesday sessions. Third, like the different kinds of questions and developing a strategy for that. So all of these, and like fourth, and developing a strategy for approaching the paper as a whole, the section as a whole. So I think like these were the 4-5 aspects that we covered very well during our classes. And GDPI, so I'm sure like there was a lot of help, like the more you practice and the tips that you shared over a period of time. And those are super helpful, and I think we can cover that once maybe the CAT is over. Once the call, अभी बड़ी टेंशन में होती है सर, मेरी GDP में वो कॉल लेके आओ भाई, वो देख लेंगे बाद में यार. क्या बात. That's
think Great. और लेके I'm gonna ask a tough question to everyone. And by the way, इसमें से Heath सो रहा था because की job है कल सुबह early morning इसको उठना है और Jagesh is not feeling well. तो भाई they are coming all for us, all for the CATKing family. And thanks everyone for joining in, and thank you all 400 odd people who are listening to us as well. Let's quickly let me ask you a difficult question for everyone. यार Jagesh भाई 100% नंबर मारा तूने. अंकिता मैडम आपने IIM अहमदाबाद क्रैक किया है. हीत भाई IIM कैलकाटा जनरल कैटेगरी, सिमरन SCMHRD क्रैक है, नारसी मुंजी क्रैक है, अनीशा मैम नारसी मुंजी क्रैक है. यार एक बात बताओ, मॉक्स के अंदर नंबर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? So there were ups and downs. There were some papers which went well. There were some papers which did not go well. And as I told, like just it's very essential to maintain calmness and composure during the entire process. Not get very excited with a good mock. Not get very depressed after a bad mock. Ensure that you learn from each and every mock. And I think that's the reason why mocks are there. मतलब तू बोल रहा है कि 100% डायलर बंदा भी बोल रहा है कि उसके भी बैड दिन होते थे तेरे भी. हाँ डेफिनेटली आई हैड बैड डेज. भाई लाइक ठोको इसी बात पे. आपको अगर जिनको ये बड़े डिमोटिवेट हो जाते, इसलिए मैं तुम लोग सब लोगों से पूछ रहा हूँ. अंकिता नंबर आ रहे थे मॉक में? टॉप कर रहे थे सारे के सारे? नहीं सर, मेरे तो बिल्कुल नंबर्स नहीं आते थे. I think मेरे पूरे I gave just like 10-15 mocks only because numbers तो आते नहीं थे. तो डिमोटिवेट होने के जगह प्रिपेयर कर लो. तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि I will do section preparation. I did not give full length mocks a lot. I gave like 10-15 mocks I think. And उसमें I think just one mock was there in which I got like 120ish around, या 118-20 कुछ. हाँ हाँ, एंड और कुछ नहीं, मतलब और किसी में भी इतना तो नहीं जाता था. I was like, ठीक है, section wise करते, but section wise में I started having like building confidence and everything. But like Jagesh mentioned, his favorite subjects is quants and everything. I started with the same intention कि अरे वाह, मेरे तो क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सब्जेक्ट्स मतलब चैप्टर सेम है, सब कुछ है. जब करने का है ना तो समझ में आ गया वो वाले अलग होते हैं, इसमें स्पीड चाहिए होती है अब तुमको, और कुछ नहीं रहता. लाइक इफ यू नो द राइट ट्रिक्स then you will be able to do it. So that is something which you need to make sure. So out of all the 3 sections, I don't think any of the sections were my strongest, or I felt कि अरे मतलब ये तो मैं कर ही लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए. तो कुछ भी ऐसा नहीं था. मुझे बस ये था कि अगर ये एग्जाम क्रैक करना है, गोल क्या है? एग्जाम क्रैक करना है ना, एक सेक्शन क्रैक नहीं करना है. तो गोल क्या है? एग्जाम क्रैक करना है. तो उसमें मेरे को कहाँ फोकस करना है, कैसे मैं अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकती हूँ. तो मुझे पता था कि हर सेक्शन में कुछ कुछ चीजें हैं जिसका होल्ड मैं कर सकती हूँ अपने पास. मतलब मेरी स्ट्रेंथ है उस पर मैं कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल वर्बल, आई न्यू की मतलब लाइक जागेश है, रीडिंग हैबिट चाहिए होती है. मेरी रीडिंग हैबिट नहीं है बचपन से. आई हैवंट read a lot. Okay, but marks इसीलिए because I started seeing कि मैं क्या रीड करती हूँ इन जनरल. ऐसा तो नहीं कि एकदम नहीं रीड करते. So I would मतलब like any normal youth person मोबाइल पे ज्यादा रहते थे. तो मोबाइल के जो भी न्यूज एप्स एंड वगैरह है या सोशल मीडिया है जो भी, तो उस पे whatever I used to read, उस समय मेरा इंटेंशन ये होता था, मेरा माइंडसेट ये होता था कि अगर कुछ जीके जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर कुछ जीके जैसा कुछ भी इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, व्हाट इफ आई एम आस्क्ड दिस, will I be able to retain this or not? So that was my intention. I used to approach everything, at least for the last 6 months मेरा अप्रोच ही वो होता था कि यार एग्जाम में ही आ गया तो चाहे वो कुछ एकदम बेसिक भी कुछ हो जाए. मतलब reading from the exam perspective. Yeah, like even in Facebook if you see there are some riddles, 10 puzzles solve कर दो. And कुछ riddles are very similar to what comes in exam, not CAT, but in few of the other non-CAT exams, right? तो मेरा इंटेंशन ही बता चलो वही सॉल्व कर देते, उसी से थोड़ी टाइम पास हो जाएगी और टाइम पास भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी. कुछ वर्ड्स आया, हार्ड वर्ड्स आया कि यार इसकी मीनिंग नहीं पता है, तो तुरंत गूगल सर्च मार लेती थी. मैं इतना दिमाग में नहीं रहता था अरे इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, सीधा गूगल सर्च मारती थी. फिर अगली बार पता होता था कि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो सेंटेंस कहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर अगर वो यूज हो रही है तो उसका मतलब क्या है. So that was my like perception and I'll come to you regarding your other examination as well. इन लोगों ने बाकी एग्जाम भी दिए थे. I'll quickly come to that. हीत भैया मॉक में नंबर आ रहे थे नहीं? IIM कैलकाटा. और बाय द वे ये एक मैं बताना भूल गया, अनीशा मैम इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर हूँ, जागेश इंजीनियर है, 3 लोग, और अंकिता मैम नॉन इंजीनियर, हीत नॉन इंजीनियर, और सिमरन दीदी भी नॉन इंजीनियर है. भाई सारे यहाँ पे 3 नॉन इंजीनियर हैं और 3 इंजीनियर भी हैं. जो लोग बोलते हैं सिर्फ इंजीनियर ही जाते हैं, सिर्फ नॉन इंजीनियर ही जाते हैं. हीत भैया टेल अस योर स्टोरी क्विकली. मॉक्स के अंदर नंबर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? Like obviously 100% Tyler has described it much more simply. So yeah, obviously it was never like a curve which was going up and up. It was a normal curve. Sometimes it was good, sometimes it was bad. And definitely, matlab, so mera perspective mock mein was not to get numbers. It was more to
understand the pattern of the exam, make myself sit for 3 hours without losing concentration. And if I lost concentration, at what points I'm losing and why I'm losing it, and how to properly attempt an exam. So that was my more of motivation rather than getting marks. And if that was achieved, then marks were secondary. Marks, like they come and like that was not much of my concern in the start. Because preparation, so any which ways we are doing it, we are solving many books and all that things. So वहाँ पे तुम already practice हो, तुम्हारी build हो ही रही है. But the other things which are required for the exam, these are some things that probably the mocks train you better for. So I think that was my main focus there. Okay, lovely. And you scored, the highest was DILR, right? Yeah. Yeah, which was 99.69. Okay, people who can see through that, ये जो जितने भी हमारे CAT के topper बैठे हैं, we're going to go to Snap and NMAT as well. So Ankita killed one section verbal ability, Jagesh killed one section with 100% level in quant, and DILR was Jagesh 99.99, right? 99.99. Yes, sir. Yeah, and verbal was 99.2, 99.3 or 99.24. 99.24. तो भाई 2 सेक्शन क्लिक करोगे 100% आ सकते हैं, 1 सेक्शन क्लिक करोगे तो ओवरऑल IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर मिल सकता है यार, क्या IIM कैल मिल सकता है. ग्रेट यार, सो अमेजिंग. सिमरन, मॉक्स में नंबर आ रहे थे? नहीं. So mostly like Ankita's story, yeah. Number नहीं आ रहे थे. But then again, a piece of advice for everyone, because I've seen so many people just give up halfway. They get depressed by the the numbers that they're getting in the mocks. So it does not define you. जैसे Heath एकदम सही attitude से जाता था, sports पे ध्यान ही नहीं देना. So I mean, you should ensure कि the paper's difficulty, your preparation level, there are a lot of different factors that come into play when you take a mock, and it's okay. You have to prepare yourself for those 3 hours that continuously एक के बाद एक section. How are you solving it? And yeah, go section wise. First, ensure कि आपकी speed बैठ रही है, your accuracy बैठ रही है हर section में, and then you go ahead with the full-fledged mocks. I mean, that was my strategy, which I took on. Super. But हाँ, please don't get depressed by the don't get depressed. कुछ ना कुछ भला हो ही जाना है ना. CAT नहीं हुआ तो अगला snap नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा, right? कुछ तो हो ही जाना. We'll talk about other exams as well. Anisha, how about you? I mean, you were a student long back. Now you're helping. You've trained so many people. I mean, you were also mentoring Jagesh long back in Powai. I remember that. So how has been your journey? मतलब mocks के अंदर number आने या नहीं आने, क्या बोलना चाहोगे? I think mocks में आपके number 90% of the time नहीं आते, ठीक है? And वो अच्छी बात है कि नहीं आते हैं, because then you will be forcing yourself to work harder. You need to also make a progress tracker for yourself. It's not that we are saying by fun कि mocks में number नहीं आते थे. नहीं आने के बाद क्या किया was very much more important. Like, every mock, make a list of questions, how many you attempted, what was the accuracy, where you went wrong, how do you improve those questions, study those topics once again. You might need to study some of the topics 10 times till you get it right in the mocks. But the objective used to be just one for me. एक mistake जो हो गई एक mock में, अगले mock में same mistake नहीं करनी. कोई अलग mistake करो, कुछ different things, so that you are, improvising. Then you are on a learning curve. Super. And one more thing which I used to do is make your trackers and everything, that's fine. But for me, verbal was my pain area. Okay, so a typical engineer. So what I used to do is, I had one Word doc where I used to put screenshot of every question I went wrong in my life. And especially for non-CAT exams, grammar ke rules na, we are not going to go back to school days and those lengthy Brennan Martin books and stuff we can't study. So I used to refer to my mistakes book, I used to call it, for myself. Verbal में बस वही revise करना है कि ये गलती दोबारा नहीं हो सकती है. Yeah. That's so amazing. तो कोई एक बार हाँ बोल. I just want to add here, the kind of thinking you treat your mocks as trying different routes on how to attempt the exam finally, because you try this strategy, it might not work in this mock, दूसरे mock में you try something else. I mean, it is, you go there from the idea that you have to try as many options, as many strategies as possible, and then you fix your own one. So I think that worked for all of us. And Ankita, you tell me, I mean, if it worked for you or not.
If नहीं, this so works. one thing which I did was initially ऐसा नहीं होता था कि मॉक्स में like he mentioned it, मार्क्स का नहीं देखते थे. My intention was कि यार अगर ऐसे पढ़ाई नहीं होगा रहा है मार्क्स के, अगर हम मॉक्स देने बैठ ही रहे हैं 1 hour के लिए सेक्शन मॉक्स भी दे रहे हैं, तो 1 hour में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट डाइवर्सिटी तो आ जाएगी ना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं. तो मेरा इंटेंशन ये होता था कि मैं मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ थ्रू द मॉक्स, इंस्टेड ऑफ लाइक कि अरे स्पीड बढ़ाओ, ये करो वो करो, बिकॉज आई न्यू कि अगर मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन, इफ आई हैव द यूनिवर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो उसी में से ना, उससे ज्यादा बाहर नहीं आएंगे. क्या होंगे, एक तो प्लस एक माइनस, प्लस माइनस चेंज होगा. तो माय इंटेंशन वाज कि मुझे यूनिवर्स चाहिए क्वेश्चन का. तो इसीलिए मैं जैसा बोली ना, मतलब मैं भले ही मैंने फुल लेंथ मॉक्स नहीं दिए, बट मैंने सेक्शन मॉक्स बहुत दिए थे. वो सेक्शन मॉक्स हेल्प्ड मी इन अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स कि अरे किस टाइप का आ सकता है, जो आएगा तो उसको कैसे अप्रोच करना है. एंड लाइक अनीशा मैम सेड, शी मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक. मेरा मिस्टेक नोटबुक नहीं होता था, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू बुकमार्क ऑल माय क्वेश्चंस कि कहाँ राइट हुआ है, कहाँ रॉन्ग हुआ है. मतलब देयर वाज अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट कि अरे ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करनी है क्या, ये ट्रिकी लग रही है क्या, ये ऐसे आ सकती है क्या. एंड मेरा ट्रिकी का डेफिनेशन ये होता था कि अगर मेरे से उस समय सॉल्व नहीं हो पा रहे, शायद मैं उस दिन भी सॉल्व ना कर पाऊँ, तो मुझे एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करनी है. तो बचपन वाली के हाल में चले जाओ यार, रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, तो तुम्हें एग्जाम से पहले रिवाइज करने, तो तुम्हें मार्क करनी पड़ेगी. तुम पूरे 100 पेज की बुक तो नहीं रिवाइज कर सकते 1 घंटे के अंदर, तो मार्क दैट 2-3 पेजेस व्हिच यू वांट टू रिवाइज. सो दैट वाज माय इंटेंशन. हाँ, इनिशियली ऐसा होगा कि तुम 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करो तो उसमें 70 क्वेश्चन तुम बुक मार्क करो, बट इवेंचुअली यू विल रियलाइज वो 70 बहुत कम होते जा रहा है, बिकॉज तुम सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हें प्रैक्टिस आती जाएगी, तुम्हें पता रहेगा कि मैं ये कर पा रहा हूँ. तो इनिशियल मार्क्स में भले ही ज्यादा होगा, एंड में वो गोल कम हो जाएगा. तो वो दिमाग में रखो. एंड बीट एनी सेक्शन लाइक वर्बल हो, कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं होता है उससे. बस यही होता है कि तुम्हारा इंटेंशन से मुझे क्वेश्चंस जानने हैं, मुझे आंसर्स मिल जाएंगे, आंसर्स होते हैं मॉक्स के बाद, तो दैट इज ओके. बिल्कुल, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग. अच्छा, जगेश का कल एग्जाम भी है और जगेश को जाना भी है. जगेश अभी स्टूडेंट आईआईएम अहमदाबाद का. जगेश भाई, वी गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन फॉर 5 मिनट्स मोर. कई लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं. मैं तुम्हारे क्वेश्चन लेता हूँ जरा, बट एक क्वेश्चन है, इनका पैकेज कितना है. देखो यार, अभी ये बताना अलाउड नहीं होता ऐसी फोरम के अंदर, ठीक है, पहली बात तो. पर मैं 2 चीजें बता दूं. अंकिता, व्हेन डिड यू ग्रेजुएट? लास्ट ईयर सर, लास्ट में. 2021. सिमरन, व्हेन डिड यू ग्रेजुएट? 2020. 2020. Okay, great. And Heath, when did you graduate? 2022. 2022. And Jagesh will be graduating in 2020? 23 next year. Next year. क्या बात है, सारे साल आ गए यार, क्या बात है. 20. सिमरन सबसे बड़ी है तू? सर सिर्फ एज में नहीं है. अच्छा, पहले घुसी है. ओहो, ग्रेजुएशन ईयर में. क्या बात है. तो भाई 2020 से लेके 2021, 2022, 2023 तक के यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, चारों अलग अलग साल के. जो लोग पूछ रहे हो सैलरी, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, पर एक तुम्हें हिंट दे देता हूँ छोटा सा. ये मुझे और अनीशा मैम को साइड में निकाल दो. हम मतलब मेरे को तो सेंचुरी होगी डायनासोर के जमाने में. नहीं, we want you to include yourself. It would take the average. सर आप भी बता दो, आपने कब ग्रेजुएट किया, आपकी क्या एज है, सर बता दो. मैं कुछ नहीं बताना चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे आसपास, मैं नहीं, मेरे आसपास के जितने भी SPJain, IIMA, IIMB है, सब लोग 1 से लेके 1.5 करोड़ के बीच में इंडिविजुअल पर्संस. ये मैं बता देता हूँ. अब तुम मेरी सैलरी मत गेस करो, YouTube पे गेस कर लिया हमने. ठीक है, एनी विच वे. बट नहीं, एक चीज का तो जवाब मिल गया, दैट द सीनियर मोस्ट अमंग्स्ट ऑल ऑफ अस डेफिनेटली इज यू. अच्छा, मतलब ओके, सीनियर मोस्ट मैं ही हूँ. हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ, इनका सैलरी चारों का मिला के 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ होगा, और ये अभी के ग्रेजुएट हैं बस. ठीक है, अब मुझे ज्यादा सवाल जवाब मतलब किसका कितना है, और ये सब स्टड कंपनीज के अंदर है. ठीक है, भारतीय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो कैट के स्टूडेंट. कॉम्बिनेशन कर लो. ये भाई हमारा बीसी मुश्किल टॉपिक होता है. क्या कह रहा सबसे मुश्किल टॉपिक होता है इंजीनियर. करो तो उनको करने दो ना, उनको इतना जानना है तो. या तो हाँ, ये भाई हमारे BCG के हैं, ये हमारे कर्नी के हैं, वो मास्टर कार्ड है, भारतीय एयरटेल. ठीक है, तो अभी तुम पैसे के पीछे मत भागो, छाप रहे हैं सब लोग. सिमरन लगती नहीं, पर छाप. ठीक है, ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन. जगेश, आई एम गोइंग टू लेट यू गो. तेरा कल एग्जाम है भाई, अहमदाबाद में पास होना जरूरी. ये बंदा बड़ा स्टड है, HEC पेरिस जा रहा है अभी, स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए जिंदगी जी रहा है. मेरे को पूछ रहा सर यूरोप जाऊं कि कितनी देर के लिए जाऊं. तो जगेश, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. जगेश, एनी पार्टिंग थॉट्स टू ऑल आवर पीपल? They are following us on YouTube. Some of them have joined the CATKing family. कई लोग ज्वाइन करने वाले. पहले तो ये बता, are they in safe hands? मतलब हो जाएगा इनका भला, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. क्या बात है. Thanks man. Any parting thoughts? पढ़ते रहो बस. Any parting thoughts to all these great people who are listening to us? 5:45.
Yeah, so what I'll just say is like it's like the exam will be around November, end of November. So you have around 4 months to go. It's a lot of time, and things can really change around in the next 4 months. Just put your heads down, start working. Just matlab, while you're working, also ensure, or basically while you're studying, also ensure that you don't get exhausted by the end of it. You have to ensure that till the end of November you're fresh and you are in a good mood to give the exam. So yeah, I think enjoy the process and you will be good to go. Once क्या again, I बात think है. I just keep repeating the same thing. Enjoy the process because that's what I did, and I think that really works out. That's so amazing. और जगह जीडी पे कॉल आएगी तो कन्वर्ट करवा देंगे ना इनको, टेंशन की बात नहीं है ना. हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा वो वो तो हो जाएगा भाई. उसके बाद. यार अहमदाबाद के अंदर से बैठ के बंदा बोले तुम बस पढ़ाई करो. हाँ, तुम बस पढ़ाई करो और ये सेशन का एक ही काम है. 200K तो हो गए, 2 लाख फैमिली तो हो गई है, पर तुम लोग को इंस्पायर करना. थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन जगेश. हैव अ गुड नाइट Thank मैन. you, विल गेट द sir. कॉल. गॉड ब्लेस यू मैन. टेक Thank you, केयर. sir. Thank you, बाय ma'am. बाय. Bye, bye, थैंक्स. everyone. All the best, guys. Take care. Take care. Bye bye. All right. Next Bye. question to Simran, Ankita, and Heath and Anisha ma'am. भाई 542 odd लोग हो चुके हैं और काफी लोग इंस्पायर. भाई स्ट्रीम को लाइक ठोक दो. सिमरन बोल इनको थोड़ा प्यार से, स्ट्रीम को लाइक ठोको यार. Simran Didi is back after long. Now that you said it, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा. No, but please keep asking us good questions and please like. Thank you. ये हमारा हम लोगों का आपस में बहुत ही प्यारा केमिस्ट्री. आज ही थोड़ा Like, subscribe, share, and comment. हम लोगों ने इतनी मस्ती करी है एंड ट्रस्ट मी कैटकिंग जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है एंड स्पेशली ऑन द जीडीपीआई ऑन द स्नैप साइड, व्हाट हीथ हैज डन, व्हाट अंकिता हैज डन. हमने जब शुरू किया था बहुत मस्ती मजाक में किया था and what Anisha ma'am has done. We've come a long way. We've come a long way. And thanks Heath and thanks Simran Dil se and Ankita ma'am for helping us on the dashboard. It's next level and I mean you can talk about the mocks etc. By the way, Ankita is the one. पिछले साल IIM Indore paper setter था, तो we said we'll have people from IIM Indore to make the mocks. Then we got IIM पिछले साल कौन था? Ahmedabad. तो अंकिता got a team from IIM Ahmedabad, even a 100 percentiler as well. जागेश ने एक और लड़का था, तो they were building the mocks. This time it's IIM Bangalore, so we got people from IIM Bangalore to make the real mocks as well. Great यार. अच्छा, last question जो कि बहुत important है यार. मैं इनको हमेशा बोलता हूँ टर्बो तैयारी करें कि इंटेंसिव तैयारी करें. इंटेंसिव मतलब सारे एग्जाम्स दूं भाई कि मेरे को बस 4 महीने कैट की तैयारी करूं और मेरा कैट होना चाहिए. यू ऑल आर टॉपर्स इन योर एरियाज एंड यू टॉक अबाउट योर जर्नी. आपने कौन सा किया था और कौन से एग्जाम्स दिए थे, कौन से क्रैक भी किए थे. दैट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि सिर्फ कैट ही दो कि सारे एग्जाम दो. अंकिता, फर्स्ट यू. So no, I would not say that's if CAT though. I also gave more than one exam, and the reason being you cannot keep all your eggs in one basket, right? अगर वो चला गया तो फिर तुम क्या करोगे, पूरा साल वेस्ट. तो उससे बेटर एटलीस्ट भर तो दो फॉर्म, स्टार्टिंग में भर दो. एंड आई थिंक NMAT इज अ वेरी गुड स्टार्टर बिकॉज चाहे तुम्हारा एम कैट हो, स्नैप हो, जैट हो, कुछ भी हो, इफ यू आर गिविंग NMAT इट हैज, आई डोंट नो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर करेंटली, बट हमारे टाइम पे 3 अटेम्प्ट होते थे कि आप 3 अटेम्प्ट दे दो, ठीक है. तो उससे एटलीस्ट आपको एक बेस मिल जाता था, पता चल जाता कि आप किस लेवल पे हो, आप अच्छा पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो. अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो हाउ डू यू लेवल अप, right? So you know which area to focus on. So I think NMAT was a very good starting point for me. October end-ish I gave NMAT, then CAT hota hai November end mein, and uske baad there is like obviously IFT, ZAT, SNAP. So whatever is your aim after that, give those exams. But हाँ, सिर्फ CAT पे तो मत रुकना, because यही होगा आखिर में कि तुम देते रह जाओगे and फिर खराब हो गए, because it is very unpredictable, sir. Yeah. Because that day what happens, no one knows. I remember in one of my attempts it happened that कि वहां पे जो एग्जामिनर था, राइट, दे वर स्पीकिंग सो मच, मतलब कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहा था. आप कितना भी बोल लो, एक तो इतने टेक्निकल ग्लिचेस, ऊपर से इतना बोल रहे थे कि कोई कुछ भी बोले, कुछ नहीं कर पा रहे थे. तो मुझे तो पता ही था, जब मैं निकली हॉल से तब मुझे पता चल गया था कि मार्क्स तो कम आएंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मार्क्स तो कम आएंगे. एंड वही हुआ. So I could not have relied on that, although I gave a second attempt next year. But still, that is what I want. Not everyone has that chance, right? And you don't know if the second attempt which you give will be good or not.
उस So दिन क्या don't- होने वाला है पता नहीं, इसलिए Yeah, बैकअप you never ऑप्शन know. ग्रेट ग्रेट Yeah, don't अच्छा know. by the time I go around the table, I'm going to ask Heath the same question and everyone people on the chat, you guys can ask questions individually as well. आज बहुत बहुत बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पे. अंकिता मैम is from IIM Ahmedabad, he's from IIM Calcutta. Simran is a snap topper. SCMHRD, they're mentors with us, they've helped us to grow. Anisha ma'am is from Narsi Monji, cracked CET, CMAT and all these examinations as well. और मेरे को कुछ भी सवाल पूछने तो मेरे को क्या पूछोगे, रोज तो मिलते हो, तो इन लोगों को कुछ स्पेसिफिक. हाँ, आई रिपीट, अंकिता फ्रॉम IIM Ahmedabad, Heath from IIM Cal. चैट में देख रहा हूँ और चैट पे कुछ सवाल पूछो, मैं आपके आंसर करूंगा. Heath, coming back. So sorry. So just one more thing which I like to add. बोल. Which was on your earlier point, right? You mentioned कि वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया मस्ती में स्टार्ट किया, बट वैसे मतलब अच्छा प्रोडक्ट निकल गया. आई थिंक लाइफ इज ऑल्सो दैट वे ओनली. मतलब तुम जब कैट भी दे रहे हो तो इतना सीरियस होके भी मत दो कि मतलब तुम बाकी चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही ना करो. बिकॉज इफ यू फोकस ऑन वन थिंग टू सीरियसली, तुम बाकी एकदम जो बेसिक चीजें भी होगी ना वो तुम भूल जाओगे. वो रटने के समान ही होता है. आपको पता होता है A to Z पढ़ना है मुझे, तुम Z के आगे जाओगे ही नहीं, 1 2 3 में जाओगे ही नहीं. तो लाइफ को इतना सीरियसली मत लेना. मतलब चलते जाओ, कुछ ना कुछ बढ़िया. हाँ, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट योर होल लाइफ. दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि कैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. और जितना लाइटली लेके चलोगे मतलब मजे मस्ती में. Exactly. I remember I was like listening to songs, I was watching Suits just like 30 minutes before my CAT exam. I was watching Suits. And then you get IIM Ahmedabad. क्या बात है. Heath, क्या है, टर्बो इन तैयारी करनी चाहिए, इंटेंसिव तैयारी करनी, सारे एग्जाम्स की तैयारी करो, एक तैयारी? What's your take on that? So I'll say my personal story. I only focused on CAT. I gave XAT once. I got some 97, 98 percentile, but I never went for the interview or anything because I was not interested. That I realized at one point, and I was like, just fuck it. मतलब नहीं करना है, खत्म है. But that was my point. That I only concentrated on CAT, but that doesn't mean that I didn't have a contingency plan. So I knew how many attempts I can give. If this didn't work out, then what other options do I have? I made a list of all these things, then did a conscious decision of giving just CAT, and I knew that how much I needed to score. So even before the results, I knew how much I'm scoring and if I'm getting any calls or not. So my aim was pretty clear, due to which I was able to concentrate on one particular exam. So if you're not clear, so अगर किसी का aim है for मान लो कि मेरे को सिर्फ MBA करना है from a renowned college, so then I would say that please give multiple exams because you are not very sure that where you want to land up. Now somebody is like, I want to only go to ABC, that's it, full stop. Now ABC does not accept anything except for CAT. So why waste your time for other exams and prepare for that? Instead, build your CV, just go give CAT. And yeah, very important point that Ankita pointed out कि भाई मजे करो. If you look at my life, I have only 4 महीने पहले मत बता हीत भाई, ये सब बकवास कर रहा है. ये लॉन्डे को मैं जानता हूँ, आज से 5 साल पहले थे, ये बोरीवली सेंटर में मुझे मिलता था और ये बंदे ने कैट दिया, मैं इसको हमेशा बोलता कर लेगा, हाँ सर पक्का हो जाएगा, मजे करता है ये. I still remember our conversation. तेरे को पता नहीं याद हो कि नहीं, just moving outside the Borivali classroom and this guy was like हाँ सर हो जाएगा सर. And he was very regular. कभी इसने छुट्टी मार, एक बंदे ने जिसने पैसे वसूल किए हमारे बोरीवली सेंटर थे वो ये था. हर सैटरडे संडे क्लासरूम के अंदर. वेरी रेगुलर. प्राउड ऑफ यू मैन हीथ, you've come a long way man. God bless you man. God bless you. But so that is how you should be, right? मतलब तुम सामने से सोच भी देखो सीरियस, तो सीरियसनेस तुम्हें अपने अंदर लानी होगी ना. दुनिया को दिखा के क्या होगा सीरियसनेस, मतलब दुनिया थोड़ी ना कुछ कर देगी तुम्हें. सिमरन चश्मा पहनने से कुछ नहीं होने वाला बेटा. Oh, I didn't realize it suited here also. एक मिनट, sorry everyone. ये लाइव स्ट्रीम का नाम चेंज करो आप पहले. सिमरन की बात लगाएंगे. Post of Simran. आज यही सोच के आए हो आप. बहुत सारे क्वेश्चन आगे. We'll take your question as well. Simran, how was your journey? You gave CAT as well. You gave Narsi Monji, Snap. You gave all the competition. How was your journey? And what do you recommend? So basically, जैसा हीत ने बोला कि if you are of that mindset कि I want to pursue MBA from a good college, so it is suggested that you go ahead, you take all the exams, jitne bhi would land you up in a good decent top 20 top 25 wala list of colleges. So wahan pe it's really important कि you prepare from the lens कि तुम्हें बाकी सारे papers का pattern क्या है. You have to take mocks accordingly. Also one more thing, even if you are pretty sure that let's say I have to target this particular college, but then too I would say that there are many people who cannot afford taking another attempt. They have 1 year, they're like iske baad I cannot keep hanging on to CAT or anything. This is my last chance to do an MBA maybe. It was somewhat a case with me.
and hence मुझे पता था कि I have to try my best across all the exams. And CAT is just one day. You never know how it might be, and that worked for me. So CAT में थोड़ा गड़बड़ हुआ, but then I went on. NMAT went well, XAT went well, TIS went well, SNAP went well. So Good. luckily for me, other doors really opened after CAT. Mhm. So it is very important that you gauge where you are, because ये एक individual journey है. You don't compare yourself with others. You Super. think कि what is it that you want down the line. And so this is a very personal story. I want to just take one more minute. I was very much into writing letters, okay, like a couple of years back. And just one day I stumbled across this website wherein you can write to your future self. So, I mean, I was just very curious about the idea. And in 2017, I wrote a letter to myself for 2021 ki Simran ke liye I wrote a letter. And when I opened it up in 2021, I was like, I don't appreciate the fact that I've achieved, quite a few things which I did not think were possible back in 2017. So, I mean, that letter really, I mean, is a very treasured thing for me now. अब तो हमें पढ़नी है सिमरन. क्या No, लिखा It था? should go public. we don't really appreciate ourselves a lot. I mean, all What of you you are. guys as well, all 5 of us as well. I mean, we should take some time and think, maybe 5 years back, हमने क्या सोचा था, and we have really achieved that right now. Super. Right. So, kudos to all of us for that. नहीं बिल्कुल सही बात. Though people who are depressed, dejected in their life right now, this is just a time. It will pass definitely, and the clouds will go away, and then sunshine will come, and you look back. अरे यार मैं क्या था यार, मैं क्या था. If you're consistent, that's the key. That's the key. Great. अच्छा, बहुत सारे question आ रहे हैं. Life at IIM, the be sincere, not serious. अतुल मिश्रा का भी question आ रहा है. But I'm going to keep it short and sweet right now. Anisha ma'am, I'm going to come to you. Simran, how was the quality of the dashboard for SNAP when it comes to mocks? सिमरन ना पूरा परिवार लेके आई है अपना Symbiosis का. Why don't you tell us? और पिछली बार Anisha, what's the number? SIBMS SCMHRD में 100+ people are there who've converted from CATKing. 73 something is at SCMHRD and similar 50+ at SIBM Pune last year. So we क्या बात है. तो सिमरन SNAP के mocks क्या situation है? How are they, and what work you put on dashboard? Why don't you quickly tell us? So much before the dashboard and the mocks, we started off with creating YouTube videos around SNAP. Yashita and I were working on that. So we had really put in our blood and sweat into it. I mean, because we would go through all the past questions. We would study them. Kaun se were sort of questions which were repeated year on year, and then we would take those. We would go on to detailed explanation of the answer, all the topics across quants, LR, verbal. So we had put in a lot of effort there. And after that, of course, we went on building the mocks. We had pulled in Mustafa, Faraz. Mustafa takes a lot of classes right now as well, I think. Yeah. And I'm sure that, these mocks and the whole dashboard in itself will definitely help you guys out if in case you're aiming for SNAP. Superb. So one more thing which I would say, like I remember Simran, Yashita, they were working on those videos, a whiteboard, like doing. Remember when she's saying that we researched on the questions and everything, सिर्फ questions पे research नहीं किया था, answer कैसे explain करना. If that is not correct, they would redo that also. कि अरे readers, मतलब जो YouTuber जो भी सुन रहा है, is that okay? Will the student understand or not? So that much effort has gone into the videos. So it's not just कि बस हमने हवे में बना दिया है, मतलब डाला था हमने effort proper डाला था. And that too we were doing when we did not have anything to do. Like ऐसा नहीं था कि हमारे पास और कुछ काम नहीं है करने को. काम हमारे पास बहुत है, but हमें ये भी करना था because one, this was a passion. Second, we knew कि यार इससे help होगा काफी लोगों को, and this is not just a short term thing. It will go on. मतलब चलते जाएगा. 2 साल बाद भी आप वो वीडियोस देख रहे होंगे अभी भी, but आपको रियलाइज नहीं होगा अच्छा ये 2 साल पहले बना था. So that is the kind of thing, like the effort which went into it is something which is sustainable. मतलब वो बहुत टाइम तक यूज होगा. True that. Heath, how about the GDPI यार? हमने वो जो नाइट आउट मारे थे. By the way, ये मैं इनको आज क्यों लेके आऊँ 200K पे? Why Sudhanshu and everyone is not here? Because we started. This is the true family. This is how we started CATKing. And that first 1 month of night out and then series of night out, it's been 1.5 to 2 years. And तुम्हारे डैशबोर्ड की काफी तारीफ होती है, मैं हमेशा याद करता हूँ. Heath, what's the what PI डैशबोर्ड? अगर इनकी इंटरव्यू कॉल आएगी, जो तुमने क्या किया उसके अंदर, क्या बनाया, क्या ऐसा?
I think उसमें हर एक topic पे concentrate किया है, which possibly panel can ask you. Maybe some might be missed, but I think they would be smart enough to get the clues from those videos as well कि वो कैसे answer करना है. But that conversation, I mean that videos that we were recording, it wasn't like it is all planned. कैसे बनाना है, मतलब ये एक answer book दी है, यही रट के बताओ. It was about आज ये question है, what was your experience, what you think should have been, and what the other people should do depending on the situation. ये सब सोच के और जब ये videos बना रहे थे, and after a point, after we have made the video and after we see it right now, we understand that that wasn't just any random things that we were talking about. We were talking so much sense because 4 people collectively, and I think there were many guests who also came along the way, and collectively we were introducing so many things there were so many pointers to write down in that one hour of a video that we were, I think about 20 videos were recorded. तो अगर इतना कुछ है तो मतलब खत्म है यार, मतलब हो जाएगा किल. ही तुझे पता नहीं होगा, इस बार 2000 मैंने अभी पब्लिक किया नहीं, पर मैं अभी बता रहा हूँ, भी रिसर्च क्या बोलते हैं, रिव्यू चल रहा है अभी. सो ब्रिकवर्क्स जो तुम्हारी IIMABC की प्लेसमेंट रिपोर्ट एजेंसी को जो वेरीफाई करते, देयर वेरीफाइंग इट. 2700 people have converted their calls. 2000, and looking at your videos, looking at these 3 हमारे cute little monkeys. Yeah, I mean monkey मैं ऐसे बोल रहा हूँ, but they're like kids to me. I love them from bottom of my heart. So I mean you've come a long way, yaar. So thanks for that, yaar. I think we're going to wrap it up, boys and girls. Any parting thoughts? Ankita, let's start with Anisha ma'am. Anisha ma'am की बारी नहीं आई, बहुत देर होगी. Anisha ma'am, any parting thoughts to all these great people? Nearly 450 लोग बैठे हुए हैं. मैं डैशबोर्ड ओपी राहुल सर, अरे मेरे को ओपी नहीं, ये लोग हैं, ये वो पहली ईंटें जो रखी है ना, ये इन्होंने रखी है भाई. मैं तो बस शक्ल है बस और माइक्रोफोन है, बाकी और कुछ नहीं है. हाँ भाई, Anisha, any parting thoughts? I think just one summary for all of you is keep working hard, be consistent, and be the way you are. Like the way he said, he was happy-go-lucky, he was partying, and he still cracked it because he is that way. If you are someone who loves to study and put in hard work and efforts, make notes, write down, study till, exam के अंदर घुसने के पहले तक बाहर book लेके पढ़ रहे हो, if you are that kind of a person, be that kind of a person. But make sure you are giving good number of mocks. You are with positive people around you who will encourage you to keep studying and working hard, because it's not about 1 month is enough or not, 4 months is enough or not. It's just your efforts which will matter in every exam, and give all the exams. Don't think, can I study all the exams together? You definitely can, and you must give all exams. Come to the other side where you have 15 colleges in hand and you decide which one to take, right? Jagesh has gone down. He had NMIMS in hand. He didn't really need, he's a CAT 100 percentiler, but he still gave that, right? I've given all exams. Every day will not be your day. Maybe you didn't do well. Maybe your system crashed. Maybe you had tech hiccups. You can't waste your entire life because your center's laptop or computer crashed, right? So give all exams, and we are there with you. We started when we were 30K. We are at 200K, but we are still here, all of us, and we will be there ahead also. All you need to do is just ask what you need. We'll come up with those videos. We'll guide you at every point of the journey. And interviews तो definitely crack कर लेंगे. जब इतने students का हो गया है तो आपका भी करवा ही देंगे. Great. Heat, any parting thoughts to all these great people who are listening to us? It's very difficult to add up after what Anisha ma'am says, but yeah, just one thing, that be candid. I mean, see, CAT and all these exams, they are a part of your life. They are not your entire life. तो वो एक दिन पे इतना प्रेशर लेके जाना है कि भाई अगर ये नहीं फोड़ा तो कुछ नहीं जिंदगी में होने वाला, तो नहीं फोड़ पाओगे भाई. You will be nervous and you won't be able to do it very well. So just be candid to yourself, be true to yourself. You have done efforts. I mean, you still have to do efforts. I think there are 5 months left, 4 to 5 months. कर दो, full जी जान लगा दो, and see what the result comes, and be proud of yourself, man. You have done the efforts, so you will do it. क्या बात है. Simran, any parting thoughts to all these great people who are listening to us? Yeah, repeating myself, don't compare your progress, your mocks, your preparation with others around you. Just focus on what strategy you have, kind of lined up for yourself. Focus on that.
And I know that June, July wala time is around, I mean, the time when exam anxiety starts kicking in. Things start getting serious around you. Just don't give up, just stay focused. And of course, I mean, keep partying also, but work hard as well. कुछ पार्टिंग हो यार, ये तुम No. You should you should keep taking breaks also. It's very much required. You cannot exhaust yourself entirely. ये पता क्या करेंगे, कल ब्रेक पे चले जाएंगे क्योंकि बोला गया कि ब्रेक ले जाओ. maybe take 2-3 days abhi, but then उसके बाद pull up your socks, come back to it. Just focus entirely on it. Superb, yaar, superb. Ankita ma'am, any parting thoughts to all these great people? We are a 2 lakh plus family and these all guys, आपको पता नहीं होगा मैं YouTube live कैसे करते थे. मेरे को आता नहीं था इतना करना. ये Zoom call पे आते थे, मैं यहाँ पे फोन रखता था और फोन को हम यहाँ पे embed करते थे और सिमरन आजा यार YouTube live करेंगे. सिमरन सर मैं कल ही गई थी and then and Ankita, that's how we started and where we are. Ankita, any parting thoughts to all these great people? How is the dashboard? How is the quality and everything is on point? Mocks and everything? Yeah. So I'll just start with repeating what Anisha ma'am said. कि अगर आप बोल रहे हो कि like be as you are, right? If you are someone who likes to study till the end minute, do that. If I am telling you कि मैंने सूट्स देखा था 30 minutes पहले भी, तो that is because मेरे दिमाग में फिर भी चल रहे थे यार, मुझे याद है ना ये ऐसा फॉर्मूला ये है, तो मेरा सिस्टम वैसे चलता है. मैं अगर किसी चीज पे देख भी रही हूँ तो मुझे पता है किस चीज पे मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है. तो मैं भी वो स्टूडेंट थी जो एग्जाम से 2 मिनट एंट्री घुसने से पहले कि यार सब कुछ सही है ना, मैं लास्ट एक फॉर्मूला शीट देख लेती हूँ, कुछ छूट ना जाए. सो भाई ये अपना कंपेयर मत करो. मेरे आगे पीछे लोग थे जो कोई चिल आउट था, कोई एकदम घुसा हुआ था, घुसना ही नहीं चाहता था एग्जाम हॉल के अंदर. तो तुम्हें वैसे नहीं होना है, तुम जैसे हो वैसे रहो, बाकी लोग से कंपेयर नहीं करना है. सो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दैट डे इटसेल्फ एंड ऑब्वियसली थ्रू आउट द जर्नी एज वेल. कमिंग टू द डैशबोर्ड, यस अगेन हमने सिर्फ बनाई नहीं है चीजें, हमने एग्जीक्यूट होते हुए देखा है. सो ऑन द डैशबोर्ड ऑल्सो वी हैव सीन हाउ दैट अपीयर्स. इज इट द राइट वे और नॉट? एडिटिंग सही से हुई है नहीं हुई है, एटलीस्ट जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं. अगर सिर्फ सबटाइटल, तो इफ यू सी द वीडियोस हैव सबटाइटल्स ऑल्सो, तो उतनी भी मेहनत गई है कि यार सबटाइटल सही आ रहे, लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहे. तो yes, the dashboard is very helpful because it has all the type of content. I have seen Anisha ma'am doing, reviewing all the content also कि अरे practice books जो है वो सही है कि नहीं, सर के जो classes के videos है वो सही से appear हो रहे नहीं, सही time पे appear हो रहे कि नहीं. And this is not because like I was working here, I was not working here, right? But still मुझे पता है because जब मैंने initially से live project किया 2-3 महीने, उसके बाद I stayed in contact with them. So I knew कि अरे यार मुझे अगर पसंद है तो मैं जान तो सकती हूँ ना, काम करो ना करो आप कोई ना कोई तो आपके फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं, राइट? दैट इज हाउ यू एसोसिएट विद पीपल. सो टॉकिंग टू देम आई अंडरस्टूड कि अरे ऐसा हो रहा है. देन बात करते करते वो दिखा देते हैं, अरे डैशबोर्ड देखेगी तो वी गोइंग टू गेट द लॉगिन आईडी पासवर्ड कि एक बार चेक कर लो. इफ यू हैव एनी व्यूज कि नो दिस इज नॉट यूजर फ्रेंडली, इसका यूआई अच्छा नहीं है, कैसे कर सकते हैं, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, लेट्स डिस्कस. तो वो टाइप के होते थे हमारे कॉन्वर्सेशन. इवन नाउ इट्स नॉट जस्ट कि काम कर लो इधर. एंड और ये क्यूट लड़की, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है. शी इज वर्किंग ऑन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, एप्स एंड प्रोफाइल. तो थैंक्स अंकिता, व्हाट यू हैव डन. मैंने बस इसको वो दिया था, इन सबको के ल्योर दिया था कि इफ यू गाइस डू दिस अमेजिंग वे में तो यू गेट एक्सेस टू माय बार. सो अंकिता ने फटाफट काम कर दिया. आई एम जस्ट किडिंग. All right, thank you so much for joining in. तुम लोग ड्रॉप कर सकते हो, मैंने इनको बोला था इनके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा. I'm going to answer these questions. Anisha, Ankita and Heath, you guys can drop. And thank you so much once again. Dil se yaar, you're a part of the CATKing family. May God bless you in all your endeavors, what you do in life. And I'm not going to let you go, huh? We're going to die together. Yeah, we're going to die together. So thank you so much, and keep killing. And all the best once again. Bye bye. Take care. Congratulations. All the best. Thank you. Congratulations. Same to you. Same to you. Bye. Take care. Bye. Take care. Okay. I can take your questions, boys and girls. Sir, not in CATKing, want to know how to deal with reading comprehensions. There are many reading comprehensions videos available on the. मैं अभी Q&A कर रहा हूँ भाई. अब 200K है, तुम लोग आए हो रात को बैठे हो तो 10 मिनट लगा देता हूँ. तो भाई बहुत सारे वीडियोस हैं, फ्रीली अवेलेबल भी हैं YouTube पे, जो CATKing ने डाले हुए वो ले लीजिए. बट the price of the courses have been dropped. अगर आप पढ़ना चाहते हो
दे कॉल मी वर्बल गॉड, मैं कोई गॉड वॉड नहीं पर दिल से पढ़ाता हूँ, सो आई एम गोइंग टू बी टीचिंग एवरी मंडे एवरी वेडनेसडे। वर्बल में अगर तेरा 70 परसेंटाइल आ रहा है तो 70 का मैं 80 ले जा सकता हूँ, 80 आ रहा है तो 80 का 90 ले जा सकता हूँ, 90 आ रहा है 90 का 95 और 95 आ रहा है तो 99। ये इतने सारे लोग आए थे यहाँ पे। हाँ बट एनी विच वेज ठीक है सर। रिजर्वेशन टुमारो कंफर्म, मोस्टली कंफर्म ही है भाई सर। एग्रीकल्चर एसपीजेन बॉम्बे, एसपीजेन बॉम्बे के लिए 598, आई डोंट नो यार। एसपीजेन बॉम्बे एक प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज हो चुका है। They'll make you to write your चिट्ठा ऑफ लाइफ, जहां पे को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, 10th 12th के नंबर्स में इतना वेटेज नहीं है पर है, पर सब कुछ पूछेंगे। गोल्ड मेडल, स्कूल में हेड बॉय, हेड गर्ल, they'll ask you everything under the sun, and then if you're the right fit for SPJIMR then they select you। कंपटीशन थोड़ा टफ हो चुका है, एवरेज पैकेज 32 लाख हो चुका है। आई वुड रिकमेंड जो लोग एसपीजेन टारगेट कर रहे हो, सिर्फ एसपीजेन ही टारगेट मत करना, अभी काफी कॉलेजेस प्रोफाइल बेस्ड हो चुके हैं। IIM अहमदाबाद भी प्रोफाइल, तो इसे रिज्यूमे बनाना कभी छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो, इट्स गोना बी गुड। हाउ द लाइफस्टाइल चेंजेस आफ्टर क्रैकिंग एन MBA, हाउ द लाइफस्टाइल चेंजेस आफ्टर क्रैकिंग एन MBA। ओके, Ankita is now off. Ankita's birthday party ka bill was 32,000 rupees. I swear on God. Okay, Ankita is from IIM Ahmedabad. 32,000 one party, huh? One night from 8 p.m. onwards to 12 p.m. How many people? Around maximum, since I'm swearing on God, मेरे ख्याल से 15 से ऊपर लोग नहीं थे, 12 या 15। Are you guys with me? तो हाउ द लाइफ चेंजेस तो देख लो अपने आप। तुम्हें मोटिवेट करता नहीं करता, बट तुम हिसाब किताब लगा लो, ठीक है। ओके ग्रेट, ओके ऑलराइट, गुड स्टफ बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स रियली गुड टू फोकस ऑन स्टडीज एज वेल प्लीज गर्ल। ओके फोकस, मुझे बहुत से लोगों ने फोकस पूछा यार। देखो यार, मैं अभी कहीं पे कोट पढ़ रहा, देखो जिंदगी में तरक्की करना है ना, देयर इज अ बुक आल्सो कॉल्ड एज डीप फोकस, यहाँ कहीं पे पढ़ी होगी। तो थोड़ा डीप फोकस की आदत डालो। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, इसको मैं बाद में भी डाल दूंगा। There's a concept called as mindfulness. सुन लेना ध्यान से। What is mindfulness? सुबह जब हम ब्रश करते हैं ना, आंखें बंद होती हैं, अपने आप ब्रश हो जाता है ना, और अपन बाहर आ जाते हैं। कुछ छूटता नहीं है, कभी कभी छूट भी जाता है, पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं पे और होता है। Start with this beautiful exercise, जिनकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, you will be thanking me later। सुबह ब्रश कर रहा है, आराम से ब्रश कर, एक बार गूगल मार ले हाउ टू ब्रश योर टीथ। बड़ा फुद्दू एग्जाम्पल, इट्स लाइफ चेंजिंग थिंग। हाँ, हाउ टू ब्रश योर टीथ, वो 2 मिनट करना होता है, ऐसे 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 करके, और उसको आदत डाल। और सुबह जो तेरी ऑटोमेटिक मेमोरी के अंदर तेरा ब्रश होता है ना, उसको छोड़, और 2 मिनट रोज कंसंट्रेट कर अपने ब्रश पे। और प्रेफरेबली इट्स द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हिच यू कैन डू दैट। You can tell your brain that your brain is not going to go haywire an entire day, and you start with 2 minutes. Number 1, once you guys practice this, have a habit, जो चल रहा है ना वो चल रहा है। अगर कोई चीज चल रही है, अगर एक मीटिंग चल रही है तो मीटिंग चल रही है। अगर मेरा साथ तुम्हारे साथ सेशन चल रहा है, आई डोंट केयर अ शिट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, वहां पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, खत्म। आई डोंट केयर अ शिट अबाउट 2B आया नहीं आया, जो मेरे शाम की क्लास होती है, आई डोंट केयर अ शिट। तो जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे तेरा व्हाट्सएप पे ध्यान व्यान नहीं, वो हमने पढ़ने का टाइम डिसाइड किया है, पॉइंट नंबर 2, उस पर पढ़ोगे तुम, बाकी छोड़ के। नंबर 3, दिस टेक्निक कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? ह्यूमन माइंड कैन ओनली कंसंट्रेट फॉर 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स। इसलिए जो मेरी क्लास होती है, मेरी क्लास में 45 मिनट्स की प्रिसाइज क्लास होती है। 40 मिनट के ऊपर आपको लग रहा है कि आप चीजें सुन रहे हो, बट आपकी इधर उधर से जा रहा है, समझ आ रही है? तो नंबर 3 पॉइंट इज 40 से 45 मिनट का स्प्रिंट मारो, फिर छोड़ो, 15 मिनट ब्रेक करो। उसी ब्रेक के अंदर पिछली बार को रिवाइज कर लो, गाना सुन लो, एक आधा टीवी देखते मत रहना, एक थोड़ा सा टीवी देख लो, एंड वापस आओ, फिर 40-45 मिनट की स्प्रिंट मारो, फिर आगे चलो, फिर 40-45 की स्प्रिंट। तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल अपने आप बढ़ना शुरू होगा। ये 3 टेक्निक है, माइंडफुलनेस है, जो जब कर रहे हैं तब वही करना है, और ये जो बेसिक वाली मैंने आपको टेक्निक बताई, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन। स्ट्रीम को लाइक पक्का ठोकिएगा, एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वी आर 2 लाख प्लस फैमिली। और भाई नया गोल बनाना है अभी, तो अगस्त 15 है, बताना मुझे कमेंट करके। एंड इफ यू गाइस आर रियली एंजॉयिंग दिस चैनल, राइट समथिंग नाइस अबाउट। मैं देख रहा हूँ तुम लोग काफी एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हो, अभी पीपल आर रिप्लाइंग टू ईच अदर। बस पॉजिटिव रखना और मोटिवेट करना है बाकी लोगों को, ठीक है? सब तो बेड़ा पार होगा। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप किलिंग। स्ट्रीम को लाइक ठोकना, एंड आई विल बी देयर टुमारो इवनिंग एज वेल। गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू।